Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another conversation with Dr Syma Hamid. एक हमारे दोस्त हैं आतिफ तुफैल, इन्होंने ईमेल भेजा था हाल में। हमारी एक गुफ्तगू थी उसको सुनने के बाद, और मैं चाहूँगा कि आप सबको ये ईमेल पढ़ के सुना दूँ, और फिर साइमा हामिद से मैं गुजारिश करूँगा कि उनकी जो खोज है, उनकी जो इंक्वायरी है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो कहते हैं, डियर कामरान साहब, सलाम, रमज़ान मुबारक। Promised by you that you'll record a final YouTube video with Dr. Syma Hamid and will ask her to share the mechanism and tools and techniques for getting rid of unguarded thoughts or unwelcome guests of human mind and destroy our peace necessarily and in an unimpeded fashion. And you shared with me that it will happen before Ramadan, and now Ramadan has been initiated. Therefore, at least record this video in the next 10 days of Ramadan and then upload on your YouTube channel, my compassionate Kamran Sahib. So thank you very much, आतिफ। आपने हमारे साथ राब्ता भी रखा, और आपने यकीनन वो सवाल पूछा है जो बहुत से लोगों के जहन में होगा, और इस पे मैं माजरत करूंगा, मेरी तरफ से ताख़ीर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए के जज्बे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साइमा, हाउ आर यू मैम? Thank you, sir, very much, Kamran Sahab. I'm very well, and I hope आप भी खैर खैरियत से होंगे। बिल्कुल, और मैं तो चाहता हूँ कि आप जो है ना, इस सवाल को थोड़ा सा अनपैक करके हमें समझाएं, हम सबको, मुझे भी, कि क्या ये जो अनगार्डेड थॉट्स हैं, या ये जो हमारे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं और हमें इधर बहकाते हैं, कैसे इनको काबू किया जाए? अच्छा, ये तुफैल साहब, आई सपोज जी, आतिफ तुफैल साहब का ये सवाल था, एंड it's a very beautiful question, and I think one way or another, as human beings, we all struggle with this mechanism and phenomena, unguarded thoughts, जिस तरह से उन्होंने mention किया। अच्छा, इस चीज में एक चीज which I would like to highlight before we get into the details. Generally, we have this need to find quick fixes, that how can we just work our way through this? What is a mechanism, or is there a tool available, or is there a technique through which we can just simply get rid of such kind of thoughts? So first of all, I'd like to address that thought in itself, right? Dekhiye, what happens is that if we understand the nature of our mind, we have to take into consideration one of the principles, and that is wanting to get rid of any thought, guarded or unguarded, is an unrealistic expectation from one own self. Why? Because now, if I ask you, I don't want you to think about a flying pink elephant. What does your mind starts to think about? I just saw one. Exactly. So, सबसे पहले हमें एक principle समझने की जरूरत है कि what is the principle on which our mind really works? What's the nature of our mind? And that is, whatever you try to resist, it will persist. Whatever you try to resist, it will intensify it. So you can only imagine, if your quest is to try and get rid of something, what is going to happen then? It'll remain and get more entrenched. It will, exactly, it will. And the idea of learning how to work with this nature of mind demands us to understand that it is not that we have to get rid of something, but we have to learn how to live above it. That is what the quest of human understanding lies around. How can we, so a better question would be,
how can we learn to live above unguarded thoughts? इस पे मुझे एक ख्याल आ रहा है, बहुत प्यारा जी ख्याल। मेरे ख्याल से जब आप बातें करती है ना, राग छिड़ता है, और अगर कोई किसी में शायरी की सलाहियत होगी तो वो शेर भी कह देगा। मुझ जी में जी नहीं है, प्लीज। लेकिन जो ख्याल मुझे आया वो ये था कि काले बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, और मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि बहुत अरसा हो गया धूप नहीं देखी। भाई अगर धूप देखनी है तो आप जहाज में बैठ और जी इन बादलों को फाश करके आप बादलों के ऊपर आ जाएं, और आप देखिएगा कि बिल्कुल क्लियर स्काइज आपको मिल जाएंगे, और साथ ही जी। साथ आप बादलों का हुस्न भी नजर आएगा। लेकिन तो इसमें अगर देखा जाए कि तो तशबीह है, फिजिकल एग्जाम्पल है। This is a very beautiful way you've and this is an analogy you've used to basically put it into words, and I think that's precisely what it is. But इसमें अगर आप ही की analogy को मैं use करूं, so what happens is if you want to, जी one thing we understand is yes, it is possible. It's not impossible. That जी is first thing, and the second is you have to ascend to a higher perspective or dimension. जी असेंशन। अच्छा, अब ये असेंशन जो है, इसमें फिजिकल एग्जांपल में तो कोई कह सकता है जी मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जहाज में बैठ के ऊपर जाऊं, और अगर ऊपर जाऊंगा भी तो चलो सूरज तो मिल जाएगा लेकिन मैं चल फिर नहीं सकूंगा, तो वो एक लिमिटेशन जरूर आती है। लेकिन मेंटल कैपेसिटी में तो कोई लिमिट नहीं है कि हम कहीं भी हों, हम असेंड कर सकते हैं मेंटली टू एनी लेवल, एंड थर्ड पर्सन बन के भी तो हम तो थोड़ा सा Achha, इसको। again, definitely, it's a very relevant preceding question that you have asked me, really. So let me try and explain it this way: प्लीज। that once we become human, and this is very important to understand, our state, to the extent हम अपने आप को establish कर सकते हैं, is not being determined. As humans, we only have two choices, really, and this applies to every human being on this planet. Either you evolve consciously or you remain stagnant. These are the only two options available. But thinking that you can evolve inevitably, again, is a trap. It's a flaw in the thinking process. To evolve in any sort, to any degree, from one state to another would require a conscious effort. All So right. if we think about it, I would like to refer one example here now. So if, as human beings, when we are born, we are not established within ourselves. Now, this is very important to understand. All other forms of life, be it an insect, an animal, a tree, a flower, a bird, they all have predetermined established states, which means the life of a flower has been predetermined and it has been established in advance, which means the maximum growth a flower can experience is when Yeah, it blooms. That's it. true, true. It is only human beings whose states are not established and they have given the freedom of choice and they can become anybody they want to. So that also creates one understanding. To be human is to be in a state of flux constantly. We suffer that freedom if you really think about it, because it's a huge responsibility. अब आपको अगर पहले से ही पता है, it's predefined, then there's no effort required. और इस पे साइमा मुझे एक ख्याल आ रहा है कि इंसान एक बहुत अहम लफ्ज़ है, और इसके हवाले से मैंने सुना है कि भाई हमारा ज़िंदगी का जो मकसद है वो इस दुनिया में जब हम आते हैं और आंखें खोलते हैं और चीज़ें समझ में आने लगती हैं, हम आदमी से इंसान बनने की जुस्तजू में लग जाएं। जी और
इंसान बनना जो है वो हमें इंसानियत करने के काबिल बनाएगा, और जी जब हम इंसानियत कर रहे होंगे तो फिर हम काबिल होते हैं अपने आप को इंसान कहलाने के लिए। जी और इस सिलसिले में मैंने देखा है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं वो ये जानते हैं कि कुरान जो है वो इंसानियत की किताब है, और जी साहिब कुरान जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। तो ये जो एक आला मेयार हमें दिया गया है, तो जो हमें शऊरी तौर पे करते रहना है। जी मसला मैं ये देख रहा हूँ कि हम, आप किसी से पूछ के देखें साइमा, और आपका तो तजुर्बा वसी है इस मामले में, कि भाई तुम कौन हो, तो जवाब आता है मैं इंसान हूँ। अरे अगर आपने अपने आप को इंसान का खिताब अभी तक, एक्सक्यूज मी। आप अहल नहीं बने तो आप कभी इंसान कैसे बन सकते हैं? एंड आई फाइंड दैट दिस इज अ डायकोटमी कि यू हैव गिवन योरसेल्फ अ सनद, a certification कि आई एम ह्यूमन, एंड ह्यूमैनिटी नहीं की। तो ये वाला एक डायलेमा मैं देखता हूँ, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि डज दिस हैव एनीथिंग टू डू विद द रीजन of why we are acting out of habit rather than conscious effort?